Welcome to Best of Biology. This is part 5 of the Heredity lecture series. Today we will be studying about incomplete dominance. We have done the concept of dominance in detail in part 1 of the Heredity lecture series. Let us quickly summarize it. When scientist Mendel crossed the tall plants with the dwarf plants, he saw that F1 progeny were all tall. Right? This means that the tall character of the plant was expressed in the F1 generation and tall plants are dominant over dwarf plants. This is called as dominance, and dominance is represented by either two capital letters or one capital and one small letter. So this is homozygous dominant and this is heterozygous dominant. Fine. Now let us see what is incomplete dominance. Actually, when other scientists repeated the Mendel's experiments on other plants, what they saw that the F1 progeny was not resembling to any of the parents. वो किसी भी parent से मिल नहीं रहा था. For example, when scientists crossed the flower color of Snapdragon flower, which is also commonly called as dog flower, and scientific name of it is known as Antirrhinum majus. In Snapdragon flower, when homozygous red flowers were crossed with homozygous white flowers, the F1 progeny came out to be pink. So the result of the F1 progeny was not resembling to any of the parents, right? But was a mixture of the two, right? So this is called as incomplete dominance when F1 progeny, that is offspring in the F1 generation, do not resemble to any of the parents but is a mixture of the two. F1 progeny shows intermediate results, and this is why incomplete dominance is also called as semi-dominance or intermediate inheritance. The intermediate means between the two. So F1 progeny is showing the result between the two, right? So this is called as intermediate inheritance या incomplete dominance. Incomplete क्यों कह रहे हैं? Because completely न red है न completely white है, right? It is showing the result between the two. Fine. Another plant that shows the incomplete dominance is Mirabilis jalapa. Commonly we know it as 4 o'clock plant. Similar results were found in its flower, that is when homozygous red flowers were crossed with homozygous white flowers, the F1 progeny came out to be pink. Let us see what are the ratios obtained in the genotype and phenotype in incomplete dominance. When F1 plants are self-pollinated, right, according to Punnet's square, the results obtained are capital R, small r is the genotype, right? When it is self-pollinated, selfing में क्या करते हैं? Same से cross करते हैं, right? So capital R small r is crossed with capital R small r. This is Punnet's square method. So capital R, capital R, capital R, small r, capital R, small r, and small r, small r. Let us see what are the phenotypic ratio and genotypic ratio. Phenotype क्या होता है? External appearance. That means हमें flowers कैसे मिले? Red, pink और white, right? हम देखते हैं कितने red थे, कितने pink थे और कितने white थे. Red किससे denote हो रहा है? capital R, right? So capital R इसमें कितना है? 1, right? So red flower is 1. Pink का genotype क्या है? capital R small r. So pink flower कितने हैं? capital R small r, capital R small r. Pink flowers are 2 in number, right? And white flowers are denoted by small r, small r. So white flowers कितने हैं? Again 1, right? So 1:2, 2:1 is the phenotypic ratio. ठीक है? Genotypic ratio क्या होता है? That is obtained by the genotypes. क्या है हमारे पास genotype combinations? capital R, capital R, small r and small r, small r. Fine. So capital R कितना है? 1. Capital R small r is capital R small r, capital R small r 2, and small r is 1.
what does this mean? That the phenotypic and genotypic ratio are same in incomplete dominance, right? और क्या है वो ratio? 1:2:1. ठीक है. Now let us see why incomplete dominance occurs. क्यों होता है incomplete dominance? ठीक है. There can be two reasons. First is that neither of the two alleles are dominant. That is कि दोनों allele ही dominant नहीं है. Second reason is that our dominant allele is not fully dominating the recessive allele. Okay, let us understand this with an example that is in the NCERT book. Okay, क्या example है कि there is a gene that is responsible for the production of enzyme. ठीक है, normal conditions में क्या होता है कि जो enzyme होता है हमारा वो substrate को product में transform करता है, right? So normal enzyme क्या करेगा? Substrate को product में ट्रांसफॉर्म कर देगा, बट द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट हैज alleles, राइट? एंड इफ वन ऑफ द allelic फॉर्म अंडरगोज सम मॉडिफिकेशंस, मतलब कि उसमें कुछ चेंज आ जाए ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, ड्यू टू दैट चेंज जो हमारा जीन है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देगा. देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटीज. क्या पॉसिबिलिटीज हैं? फर्स्ट इज दैट द एंजाइम प्रोड्यूस्ड इज नॉर्मल, ठीक है, या फिर वो लेस एफिशिएंट हो. लेस एफिशिएंट कब होगा? जब उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ गया है, जब वन ऑफ द allelic फॉर्म में क्या आ गया है? वेरिएशन आ गया है. ठीक है, अगर वेरिएशन आ गया तो वो लेस एफिशिएंट हो जाएगा. ठीक है. सेकेंड केस में क्या हो सकता है कि जो एंजाइम है वो नॉन फंक्शनल हो, वो कोई फंक्शन करे ही ना, दैट मीन्स सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म नहीं करे. एंड इन थर्ड केस नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड. ये भी हो सकता है कि जो हमारा जीन है वो कोई एंजाइम प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा. ओके, व्हाट इज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दिस पॉसिबिलिटीज? फर्स्ट केस में अगर एंजाइम नॉर्मल हुआ या लेस एफिशिएंट हुआ, नॉर्मल हुआ मीन्स डोमिनेंट है. ओके, अगर नॉर्मल अलील है, इफ अलील इज नॉर्मल एंड इज प्रोड्यूसिंग अ नॉर्मल एंजाइम, तो हमारा जो ये अलील होगा वो डोमिनेंट होगा. ठीक है. अगर उसने लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस किया, लेस एफिशिएंट मीन्स कम काम कर रहा है, राइट? कम काम कर रहा है मतलब कम डोमिनेंट है. ठीक है, सो दैट मीन्स कम डोमिनेंट है मतलब हम लेस डोमिनेंट को हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट, राइट? इनकम्प्लीट डोमिनेंट. तो जो हमारा लेस एफिशिएंट एंजाइम अगर प्रोड्यूस हुआ तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा. एंड इफ द एंजाइम प्रोड्यूसेस नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम प्रोड्यूस हुआ तो वो हमें देता है रिसेसिव कैरेक्टर, यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं होता है. ओके, सो देयर आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फर्स्ट इज दैट F1 इज इंटरमीडिएट ऑफ द टू पेरेंट्स, मतलब जो F1 ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी पेरेंट को रिसेंबल नहीं करता है, इंटरमीडिएट होता है दोनों पेरेंट्स का, इसलिए ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस. फाइन. एग्जाम्पल्स यू हैव टू रिमेंबर, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. फर्स्ट एग्जाम्पल वी डिड वाज स्नैपड्रैगन फ्लावर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीराइनम मेजस. एंटीराइनम मेजस जो है वो उसका साइंटिफिक नेम है. ठीक है, कॉमनली हम उसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज 4 o'clock प्लांट, मिराबिलिस जलपा. ठीक है. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो सेम होते हैं. ठीक है, क्या रेशियो ऑब्टेन किए थे हमने? 1:2:1. So 1:2:1 is the phenotypic and genotypic ratio and that is same in case of incomplete dominance. ठीक है. This was all about incomplete dominance. Thanks for watching.